Good morning, students. Seen from a distance, hilltops, huge rocks seem to assume various shapes. They make resemble an animal or a human face, and people attribute stories to these shapes. Have you ever heard of such stories in your from your grandparents or somebody? Well, welcome each one of you to Sporting Angels Educational Spectrum. It's English time, and today we shall be discussing reading such a story related to a human face that was seen from a distance on a hilltop. It's a very interesting story. Let's read the story first. One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सूर्यास्त का समय है. इट्स सनसेट टाइम एंड अ मदर एंड अ लिटिल बॉय was sitting at the door of their cottage. मम्मी और बेटा दोनों बैठे हैं अपनी कुटिया के सामने दरवाजे पर, और वो बात कर रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस के बारे में. वे बात कर रहे थे उस फेस के बारे में जो अपनी कुटिया के सामने जैसे ही ऊपर देखते हैं तो सामने दूर हिल टॉप के ऊपर वो फेस दिखाई देता है. And what was the great stone face? The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. The belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. ये जो ग्रेट स्टोन फेस था, ये पहाड़ की जो परपेंडिकुलर साइड थी उसके ऊपर रॉक्स की एक ऐसी शेप बन गई थी कि वो दूर से फेस दिखाई देता था. बट इफ समबडी अप्रोच्ड वेरी नियर टू इट, अगर आप बहुत पास जाएंगे तो फिर ये जो बहुत बड़ा जो फेस था तो इसके सारे फीचर्स फिर वैसे नहीं लगते थे. इसकी आउटलाइन खो जाती थी कहीं पर,
और फिर ये वो जाने पर, लेकिन डिस्टेंस से निश्चित रूप से क्लाउड्स में वो फेस बड़ा पॉजिटिव और ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल जिंदा है। तरह से बहुत सारे लोग तो यहाँ तक भी कहा करते कि घाटी में जो इतना उन्नत है और इतनी जो खुशहाली है और इतनी जो वहाँ अच्छी मिट्टी है, वो सब उसी की वजह से है। And her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. Mother, said he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो बच्चे ने कहा कि मम्मी, अगर ये फेस बात कर सकता तो कितनी प्लीजेंट वॉइस होती, और क्या कभी ऐसे फेस का कोई आदमी दिखाई देगा? अगर दिखाई देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. His mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest. Some future day, a child should be born. तो माँ ने कहा कि हो सकता है अगर एक पुरानी प्रोफेसी है, अगर किसी दिन वो सच हो गई, जो कि बच्चे की माँ ने उसकी मम्मी को, यानी कि बच्चे की नानी जी ने उसकी मम्मी को सुनाई थी, अगर वो प्रोफेसी कभी सच हुई तो फिर इस ऐसे फेस का कोई व्यक्ति हो सकता है, और उस प्रोफेसी के अनुसार एक दिन आएगा। Who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. Mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I see him. His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, perhaps you may. तो माँ ने उस प्रोफेसी के बारे में बताया जो उनकी माता श्री ने उनको सुनाई थी कि एक दिन इस बिल्कुल ऐसे ही फेस का एक बच्चा जन्म लेगा और वो ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होगा उस समय का, और वो बिल्कुल स्टोन फेस जैसा ही उसका फेस होगा,
बहुत सारे लोग इस ओल्ड प्रोफेसी में विश्वास भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये तो सब फालतू की बातें हैं। और इस तरह से बच्चे को माँ चाहती थी कि वो बच्चा जो कुछ इमेजिन कर रहा है, जो कुछ सपने देख रहा है, तो उसका सपना टूटे नहीं। कि मम्मी, अगर ऐसा आदमी आए तो मैं उसे मिलना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। तो मम्मी ने कहा शायद तुम जरूर उस व्यक्ति से मिलोगे। And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked. He spent his childhood, the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth. Had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and. तो अर्नेस्ट को हमेशा वो स्टोरी याद रही जो उसकी माता श्री ने उसको सुनाई थी। और उसका जो चाइल्डहुड था वो ज़्यादातर इस तरह से बीता कि वो अपनी मम्मी के प्रति बहुत ही ब्यूटीफुल बन गया। वो छोटे छोटे कामों में मम्मी की मदद करता था और he became a very lovely child, a loving heart, और बड़े मैनरफुल बच्चा था। और वो बड़ा मम्मी के साथ हेल्प किया करता। वो एक क्वाइट सा, एक सोचने समझने वाला शांत स्वभाव का यूथ डेवलप हुआ। अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था वही उसका टीचर बन गया और उसी ने उसके टीचर की भूमिका अदा करी। उसकी स्माइल से उसे बड़ा इंकरेजमेंट मिलता था और बड़ी काइंडनेस सा महसूस होता था। About this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear resemblance to great stone face had appeared at last. It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport, gather gold. His name, he had set up as shopkeeper and being sharp in his business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. तो वैली में ये र्यूमर था कि उस महान व्यक्ति का जन्म हो चुका है जो ग्रेट स्टोन फेस जैसा रिजेंबल करता है, उसके जैसा दिखता है। और ऐसा कहना था लोगों का कि एक यंग मैन जो वैली में जिसका जन्म हुआ था और बाद में वो सी पोर्ट
पे चला गया, वहाँ सेटल हो गया। नाम था उसका गैदर गोल्ड। अब उसने इतना सारा पैसा वहाँ पे कमाया कि अगर वो अपना पैसा भी गिनने लगे तो उसे लगभग 100 साल लग जाएंगे। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." तो एक दिन जब अर्नेस्ट सोच ही रहा था उस ग्रेट फेस के बारे में, उस ग्रेट पर्सन के बारे में, कि आखिर उसका जन्म हो चुका और अब वो वैली में आने वाला है, तभी लोगों की आवाज़ें आने लगी और लोग चिल्ला रहे थे, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड, देखिए मिस्टर गैदरगोल्ड आ रहे हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. The very image of the great stone face. Shouted the people, "Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last." तो इस तरह से वो घोड़ा गाड़ी 4 हॉर्सेज के साथ अब जब टाउन से मुड़ी तो ये समझ में आ गया था कि वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखने वाला महान व्यक्ति आ चुका है। लोग नारे लगा रहे थे, आ गया। और वो जो आखिर And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernest, the man will come." तो देखिए, जब सभी लोग विश्वस्त थे कि वो आ चुका है, वो पर्सन है, अर्नेस्ट ने उस आदमी से मुड़कर के दोबारा जब ग्रेट, तो मानो वो स्माइल करके कह रहा हो कि अर्नेस्ट निराश मत हो, वो आएगा। The years went on, and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Idea was that this was a folly, but pardonable, because Ernest was industrious, kind, and neighborly, did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. They did not know that from this would come a better wisdom than could be learnt
from books. तो इस तरह से समय बीतता गया और अर्नेस्ट अब एक यंग मैन बन चुका था। वो वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे वो बड़ा उसको पसंद करते थे और वो अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद करता था। वो ये जानता था कि अभी ग्रेट स्टोन फेस के जैसा जो व्यक्ति है उसको तो आना अभी बाकी है। अर्नेस्ट बड़ा मेहनती, दयालु और मिलजुल के चलने वाला लड़का था, इसीलिए वो लोग उसके हर गलती को भी माफ़ करने को तैयार रहते थे। और उनको ये नहीं पता था कि ग्रेट फेस जो है वो अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है। Did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him? A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो कुछ दिन बाद मिस्टर गैदरगोल्ड, जो वो मर्चेंट था जो वैली में आके सेटल हो गया था, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुकी है और लोग भी अब बात करने लगे हैं कि मिस्टर गैदरगोल्ड का फेस ज़्यादा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता नहीं है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown up children prepared to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Therefore was the excitement throughout the valley, and many people who never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. तो ऐसा हुआ, उसी मिट्टी का एक और महान बेटा जो कि सेना में भर्ती हो गया था और एक फेमस कमांडर बन चुका था अब, और लड़ाई में अच्छी लड़ाई लड़ने की वजह से उसका नाम पड़ चुका था ब्लड एंड थंडर। अब रिटायर होके वो भी गांव में आना चाहते थे। लोगों ने उसका भी
वेलकम किया और लोग कहने लगे कि उनका फेस भी ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। दिल्ली में सब लोग सोच रहे थे कि लगभग वैसा ही फेस है उनका। On the day of General's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where the great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. It's the same face exactly, cried one, dancing for joy. जनरल साहब के अराइवल वाले दिन अर्नेस्ट और दूसरे बहुत सारे लोग उसी स्पॉट पर पहुंच गए और फ्लैग्स लेकर के सोल्जर्स भी गार्ड ड्यूटी कर रहे थे और इस तरह से बहुत सारी आवाज़ें एक साथ कह रही थी कि उनका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है। Wonderfully like it, that's a fact, replied another. And why not? Cried a third. He is the greatest man of this or any other age, beyond doubt. Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him. Fear not, Ernest, he will come. तो इस तरह से सभी लोग बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही फेस है जनरल साहब का। और अर्नेस्ट लास्टली जब ग्लांस कर रहा था तो अर्नेस्ट को आवाज़ आई कि नहीं। So, boys and girls, the story here becomes very interesting. See, the exactly the same person who has to appear has not appeared, it seems. भीड़ जब भी कोई एक पर्सन आता है तो उसको कहने लग जाती है ये वही आदमी है, वही आदमी है, और थोड़े दिन बाद कहते हैं नहीं वो नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि मर्चेंट आया तो भी और अब जनरल साहब आए तो भी अर्नेस्ट को ये पता लग जाता है कि ये वो आदमी नहीं है। वो आदमी कब आता है, कैसे आता है, ये जानेंगे पार्ट 2 में। उससे पहले पार्ट 1 के बेस पे सारी एक्सरसाइजेज आप कीजिए।